Yes, very good afternoon. My name is Dr. Sanjeev Singh, and my today's topic is pin diagram of microprocessor 8085. Before starting the explanation related to twin pin diagram of an 8085, let us discuss a certain basic related with an 8085 microprocessor. Now, 8085 microprocessor is an is an 8-bit microprocessor. That means it accept and process and provide the 8-bit data as an output. That means ये क्या करता है कि ये लेता है 8 बिट्स को लेता है, उनको प्रोसेस करता है, एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर प्रोसेसिंग द bits, it gives an resultant of an 8 bit. Now it is an 40 pin IC, and the working voltage of an 8085 is plus 5 volt. It has 16 bit address bus, ठीक है, which is unidirectional. That means the flow of the data is always from the microprocessor to an memory, and it is used to assess 2 to raise power 16. That means near about 65,536 amount of an memory at any given instant of the time, or we can say approximately 64 kilobytes of memory. Now it has 8-bit data bus and is bidirectional. Address buses are unidirectional, whereas data buses are bidirectional. That means the flow of the data is from microprocessor to an input output devices are in memory, or from microprocessor to an input output memory, or from input output memory to an microprocessor. It has 74 instructions within 5 addressing modes, and they are immediate, register, direct, indirect, and implied addressing modes. The arithmetic logic unit of ALU, the ALU unit, arithmetic logic unit of an microprocessor 8085, it processes the 8-bit data. It perform arithmetical and logical operations, and they are 8-bit binary addition with and without carry, 16-bit binary addition, 2-bit BCD addition, 8-bit binary subtraction with and without borrow, and 8-bit logical operations such as AND, OR, XOR, and NOT. These are the logical operations that are performed by the microprocessor 8085. It has five hardware interrupts, and they are trap, RST, 7.5
5, RST 6.5, RST 5.5, and then after that INTR. Now the functional diagram, pin diagram of 8085 is as shown in this figure, and it is further segregated into a 7 groups depending upon their functions. Now signals in the 8085 microprocessor pins may be divided into in 7 groups based on their functionality, and first one is what? Power supply and then clock signal. This is what power supply, VCC and VSS, and then clock signal X1 and X2 pin, which is used for connecting the tuned circuit. Then address buses and data buses. Now these are the address buses and then data buses. This one is address and data buses. As I already told that microprocessor 8085 have 16-bit address buses and 8-bit data buses, whereas lower order address buses are multiplexed with an data buses, and they are represented by AD0 to AD7. Now then after that, reset signals, as it is indicated in this side. This is reset out and this one is an reset in signal. Serial in input output port, these are the which is used for transfer of an data from the microprocessor to an external world and from the external world to an microprocessor serially flow of the data. And then after that, control and status signal, these are the controller status signals. And then after that, interrupt and external initiated signal, these are the interrupts, and then externally initiated signals where an acknowledgement signal is also given in this. And the last one is what? Direct memory access signals, that is what? DMA, and it is represented in a diagram with an hold. This one is what? Externally generated, and then hold acknowledge, this one. Now the next slide. Now pin number 1 and 2, as it is indicated by X1 and X2, these are used to connect the tuned circuits such as LC, RC and crystal oscillators. Okay? And out of these, mostly what we use, crystal oscillators are mostly used because of their crystal oscillator are mostly used because of their reliability as compared reliability and as size as compared to LC and RC circuits. And then after that, these clock signals are further divided by 2, okay, so that a system can have a clock frequency of 3 megahertz
and with this the maximum frequency that is to be generated is 6 megahertz, that can be internally divided by 2, so that the frequency that at which the microprocessors operate is of an 3 megahertz. Now pin number 37, it is an clock output. This signal is used by other devices as a system clock. Its frequency is half that of an oscillator. That means the frequency it should be of an 6 megahertz, so that it can be 6 megahertz, and further it is get divided by 2 and will generate a frequency of an 3 megahertz. Then pin number 40, which is used for supply of plus 5 volt as an working voltage, and pin number 20 with respect to which all the voltages are measured, that is what an ground pin. And then after that pin number 12 to 18, they are address and data buses. As I already told कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस हैं of an 8085, they are multiplexed with the 8-bit data buses. Purpose is what? To reduce the number of pins in an 8085 microprocessor. During the machine cycle T1, they act as an address buses, and for remaining time period, that is from T2 to T3, they act as an bidirectional data buses. And then after that pin number 21 to 28, they are higher order address buses. It is from A8 to A15, and they are unidirectionals. Now pin number 4 and 6, this is what they are used by the microprocessor to communicate with the external world, and they are indicated as SID, which is called as a serial input data, and SOD, which is called as serial output data. These input signal takes serial data from the external device bit by bit. That means sequentially जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा from the external device towards an microprocessor. Whereas in case of SOD, that is serial output data, in this case the microprocessor क्या करेगा? Send करेगा data bit by bit sequentially, one by one, to an external device. Now after this pin number 36 and pin number 36 and 3, which is indicated as an reset signal. Now reset signal is always indicated with an bar, reset in. It has two signals, reset in and reset out. Reset in is always indicated with an bar signal and it is an active low signal. अब जैसे ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स तो व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट? द प्रोग्राम काउंटर इज रीसेट टू 00. दैट मीन्स प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूट. और जैसे ही हम लोग रीसेट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, द मोमेंट वी रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर को, ठीक है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उनको क्या कर देगा? रीसेट करेगा एंड इट रीसेट फ्रॉम द इनिशियल एड्रेस दैट इज व्हाट 000H. ठीक है. मोर ओवर ये क्या करेगा? इंटरप्ट इनेबल एंड होल्ड एक्नॉलेज जो फ्लिप फ्लॉप है आर आल्सो रीसेट. वेयर डाटा बसेस, एड्रेस बसेस and control buses are all tri-state.
दैट मीन्स इन सबको ये क्या कर देगा, फ्लोटिंग स्टेट में कर देगा. दैट मीन्स दे आर इन एन आइडियल स्टेट में हो जाएंगे, आइडियल स्टेट में होंगे. दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ द डाटा फ्रॉम आइदर फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू एनी डिवाइस और फ्रॉम एनी डिवाइस टू एन माइक्रो प्रोसेसर. And moreover, this is what one of the most important, and moreover randomly affect करेगा किसके, the content of the microprocessor internal registers. That means जो internal registers हैं, they are A, B, C, they are all 8-bit registers हैं. ये सारे के सारे क्या है, 8-bit रजिस्टर हैं. इनके कंटेंट जो हैं वो क्या करेंगे, रेंडमली अफेक्ट करेगा. दैट दे मे हैव एन गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है इनके अंदर. ठीक है. व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट, जैसे ही रीसेट होगा वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय एन प्रोग्राम काउंटर एंड द मेमोरी लोकेशन इज व्हाट 0000H. ठीक है. एंड causes a 8085 microprocessor pin diagram to execute the first instruction from the address 00. ठीक है. and for an effective implementation, that is what reset करने के लिए must be reset, effective reset होने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को, that means ये जो पिन है इस पे जो सिग्नल है should be low at least 3 clock cycles तक ये सिग्नल लो होना चाहिए. ठीक है. फॉर एन प्रॉपर रीसेट करने के लिए द पावर ऑन रीसेट सर्किट कैन बी यूज टू वेरीफाई दैट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द एड्रेस शुड बी फ्रॉम 00H इज टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है. जैसे ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करते हैं, दैट मीन्स व्हेन वी गिव द लो सिग्नल ऑन दिस पिन, तो उस समय क्या होगा, आफ्टर गिविंग द लो सिग्नल एंड इट शुड बी लो एटलीस्ट 3 क्लॉक साइकिल्स तक ये लो रहना चाहिए. ठीक है. और जैसे ये लो रहेगा एंड देन आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपन, एक तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा टू द वैल्यू ऑफ एन 00 विच एंड द स्टार्टिंग और एन इनिशियल एड्रेस ऑफ एन मेमोरी. एंड देन आफ्टर दैट इंटरप्ट इनेबल, अगर कोई भी इंटरप्ट और एन होल्ड एक्नॉलेज फ्लिप फ्लॉप अगर सेट भी था. ठीक है. दैट मीन्स कोई इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था या फिर किसी अनदर मास्टर को उसने कंट्रोल दिया हुआ था, किसका, एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बसेस का, उनको क्या करेगा, रीसेट करेगा. एंड जैसे ही रीसेट करेगा और उस समय एट दैट मोमेंट जितनी भी एड्रेस बसेस, डाटा बसेस एंड कंट्रोल बसेस को क्या कर देगा, ट्राई स्टेट पे करता है. दैट मीन्स दे आर इन द फ्लोटिंग स्टेट, देयर इज नो फ्लो ऑफ द डाटा आइदर फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू आर फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. दैट मीन्स वो एक्ट करेंगे एज एन आइडियल उस समय. ठीक है. और मोर ओवर क्या करेगा, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर्स हैं उनको रैंडमली अफेक्ट कर देगा. ठीक है क्लास. आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि after what will be happen if the reset pin goes low, and then after that reset out, this is what the reset out is used by the microprocessor to reset. once the microprocessor, जैसे ही microprocessor खुद reset करेगा तो वो क्या करेगा, and then after that with the help of an reset out signal which is an high signal, वो क्या करेगा, with the help of an this signal all the peripheral devices which are connected to the microprocessor उनको भी reset कर देगा. ठीक है. Now the next functionality of an pin, control and status signals. Now after this, pin number 30 which is an ALE, address latch enable. अब क्लास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल. ठीक है. नाउ एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल ये क्या है कि सपोज दिस इज व्हाट द क्लॉक सिग्नल. ठीक है. ड्यूरिंग फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस वन, दिस इज व्हाट T1 and this is what T2 and then after that this is T3. Now during this time period T1 ये क्या करता है, it goes high
और ये क्या करता है कि जितनी भी लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस जो हैं जो मल्टीप्लेक्स हुई हैं किसके साथ, AD0 टू AD7 तक जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस हैं विच आर मल्टीप्लेक्स विद एन डाटा बसेस, उनको क्या करता है, ये क्या करता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड T1 टाइम पीरियड ऑफ द मशीन साइकिल, ये एक्ट करती हैं उस समय एड्रेस बसेस का काम करती हैं. दैट मीन्स ये क्या करती हैं, लोकेट करती हैं एड्रेस ऑफ एन मेमोरी और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस विच हैज़ टू बी कम्युनिकेट. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट T1 के बाद दे आर कन्वर्टेड इन टू एन, दैट मीन्स T2 और T3 पीरियड में दे आर कन्वर्टेड टू एन डाटा बसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड बाई डायरेक्शनल एक्ट करती हैं. दैट मीन्स द फ्लो ऑफ द डाटा इज फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइस और एन मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू एन माइक्रोप्रोसेसर. Now the next pin is pin number 34, which is IO/M bar. M dash means M bar. Now this pin have a dual functionality. ठीक है. If the status of this signal is high, अगर ये high है 1 है, ठीक है, that means high है, तो ये पिन एक्ट करेगी एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए. अगर इफ इट इज 0, अगर लो है यहाँ पे सिग्नल, देन इट जो है एक्ट करेगी एज एन मेमोरी. ठीक है. दैट मीन्स IO/M bar, it is a status signal which determines whether the address is too for input output or for an memory. If it is high, then the address on the data bus is for an input output devices, and if it is low, then the address on the address buses is for an memory. ये पिन ये डिफाइन करेगी. And then after that pin number 29 and 33, they are S0 and S1, which is called as an status signal. They distinguish various type of operations such as halt, reading, instruction fetching or writing. Now this is what the functionality which has been given in this side. The microprocessor have 7 status signals. ठीक है. And for this S1, S0 and input output / memory, when the signal on this is 0, if the signal on this is 0 and this is what 1 1, this indicate that the operation that has been performed by the microprocessor is an opcode fetch. And then after that, if the signal on these 3 pins is 0 1 0, so this clearly indicate that at that moment, since this one is 0 and this is what M input output / M bar. Now M bar is what 0, this is what related to an memory, and the operation which is performed is an memory read. Thumb rule, S1 indicate the read operation and S0 indicate the write operation. Now in this case, this is again 0, which is indicated to the memory, and this is what 0 and S not having the value of 1, which is indication for the memory write operation. Accordingly, these 3 operations are performed by the microprocessor and the signals are given in a table this. Now then after that, pin number 32, 31 and 35, and they are read, write and ready pin. Read, it is always an RD bar. ठीक है. Read and similarly WR bar. They are active low signals. Active low means कि ये ऑपरेशन कब परफॉर्म करेंगे, जब इन पे लॉजिक जो होगा वो लो होगा या 0 सिग्नल होगा यहाँ पे. ठीक है. एंड आउट ऑफ दीज 2 सिग्नल्स, दैट इज व्हाट रीड एंड राइट ऑपरेशन, इन दोनों में से
कोई एक ही ऑपरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। वो आइदर रीड ऑपरेशन होगा, जब वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो राइट ऑपरेशन नहीं करेगा, जब वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो रीड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम द माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म आइदर रीड और राइट सिग्नल, ओ सॉरी, रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है, and then after that ready, this one is in pin number 35. It is used to sense whether the peripheral is ready to transfer the data or not. If it is high, then the peripheral is ready to transfer the data. If it is low, that means the microprocessor has to wait till it goes high, and it is used for interfacing low speed devices with the microprocessor. Now then after that, direct memory access signals are, they are pin number 39, which is indicated by a hold, and signal on this hold pins indicate that a signal on hold इंडिकेट करता है दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग फॉर द, किसके लिए, रिसोर्सेज ऑफ एन माइक्रो प्रोसेसर, एंड दे आर एड्रेस बसेस, डाटा बसेस एंड कंट्रोल बसेस के लिए। ठीक है, द मोमेंट जैसे कोई मुझे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वट आई एम डूइंग प्रेजेंटली, पहले मैं उसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ख़त्म करूँगा, और ख़त्म करने के बाद द मोमेंट आई लुक एट द पिन होल्ड, जब यहाँ पे मुझे हाई सिग्नल मिलेगा तो दिस इज व्हाट एन इंडिकेशन फॉर मी दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेज एंड दे आर एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल बसेस। ठीक है, द मोमेंट आई रिसीव दिस सिग्नल, मैं क्या करूँगा, एड्रेस कंट्रोलर डाटा बसेस को क्या करूँगा, ट्राई स्टेट में करके और ट्रांसफर इनका जो कंट्रोल है वो अनदर मास्टर को दे दूंगा। एंड द मोमेंट द मास्टर गेट द कंट्रोल ऑफ these devices, वो क्या करेगा, मुझे इक्नॉलेज करेगा with the help of an hold acknowledge signal। ठीक है, that the buses that has been put by me on an try state, ठीक है, उनका जो कंट्रोल है उसने ले लिया है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट पिन नंबर 6, 7, 8, 9 and 10, they are for interrupt and peripheral initiated signals. Now there are 5 hardware interrupts, ठीक है, and these are the 5 hardware interrupts, and they are the trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR। ठीक है, आउट ऑफ विच जो ट्रैप है वो नॉन मास्केबल है, एंड बाकी जितनी भी हैं that means RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR maskable interrupts। that means जो ट्रैप है, ठीक है, हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और जब कभी भी इस पे रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ठीक है, मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर को उसको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। दैट कैन नॉट बी मास्क, दैट मीन्स कि मैं उसको टर्न डाउन नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट। whereas बाकी जितनी भी हैं, and then after that 7.5 having the second highest priority and maskable, RST then third highest priority maskable, and then after that 5.5 and then INTR, they are maskable interrupts, and they can also be used to increase the interrupt handling capacity of an microprocessor by using an external programmable interrupt controller, that is 8259 को हम लोग यूज करके, and they can be extend up to 64 devices can be connected to an 8085 microprocessor। and then pin number INTR, ठीक है, जब कभी भी माइक्रो प्रोसेसर, whenever the microprocessor respond to an interrupt signal that has been generated by these pins, that is trap, RST 5.5, 6.5, 5.5 and INTR, in response to that microprocessor क्या करेगा, give an active low signal which is an INTA bar।
ठीक है, ये क्या करेगा, एक्टिव लो सिग्नल जनरेट करेगा विद एन इंडिकेशन दैट के it is an interrupt acknowledge sent by the microprocessor after INTR interrupt request is received. Thank you, class.